Hi, all of you. I think it's 6:20. Okay, so let's start this class at 6:35 or something, so that I can accumulate the people. So I can see Jackson Sabu. He's saying hi, sir. Hi, Jackson.
So first of all, a very special good evening to all of you. Okay, so people know me. Hi, my name is Zavi Gupta, and I'm going to discuss about everything about this fast track batches. Okay, so might be possible there will be some lag of, if I'm not wrong, there is a lag of 10 to 15 seconds. Might be possible there will be chances that you will not be getting the voice. Okay, just let me know if any kind of what you can say, if any kind of disturbance is there, please let me know via chat box. Meanwhile, I can see there are 6 people. At least you can say hi, so I can just remember that people are there. Please just write hi. Okay, now the next step is, am I audible properly? Because there is might be there is some problem in voice, because my there is some hardware issue in this desktop. So that's the reason I think there will be small disturbance will be in the voice. I promise you this will be only for the one lecture. After that, this will be resolved. So don't worry. Okay, so meanwhile, I'm going to start this session after 2 minutes. Till then, just chill, and after that, we will be going through this express. Okay, and we will understand an entire section. Now, chalo. So now let us discuss about everything. Okay. So now what's my plan is at this moment. Okay, please understand there might be some lag
बीच में वॉइस ही नहीं आएगा, बट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, सो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो टोटल रिविजन सेशन है, this might be covering 60 hours, and this in the 60 hours I'm going to cover every topic. Okay, सब टॉपिक होगा कंप्लीट, एंड द सेकंड थिंग थोड़ा सा ये फास्टर वर्जन होगा। ओके, लेट मी टेल यू, आई विल बी वेरी क्लियर, दिस बैच इज ओनली फॉर द पीपल। मैं कुछ क्राइटेरियाज लिख रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बैचेस ऑब्वियसली किसके लिए। ओके, सो द पॉइंट नंबर 1, फॉर दोज पीपल हु हैव स्कोर्ड more than 280 marks in the this Jan Feb window result. Okay, sorry, September October result. These people can sit the exam. Second people are those people who are planning to give their attempt for the first time, but they have completed their first reading. Okay, if you already know the concept little bit, trust me, I'm going to cover everything for you. Okay, so basically my funda is very clear that I want to make sure that every student of mine should score 400 and up. Okay, so that's the reason I'm started with this batch. Okay, the people who are my student, that is very good, people are attending, and those who are not my students, please try to contact me on my number. You can find my number on website and this YouTube channel also. Okay, so now let's come to the point, section C. Okay, so why I'm starting this, because this chapter is one of the small chapters. Okay, छोटा chapter है, and obviously this will take lesser time to complete. So normally मैंने क्या किया है, I have divided this entire thing into 4 segments. Okay, part number 1 is cost and variance measures. Second point is responsibility centers. Third is transfer pricing. Next is performance measure. Okay, so this entire chapter I have divided into 4 parts. So sir, how you are going to take the target? Okay, very simple. So obviously this will take one session. Okay, so I try to complete this entire section today itself. In the second class I'm going to solve this. In second class I'm going to solve this also. In the third class I'm going to take some theory topics from this, and might be possible till third and fourth I'm going to complete this entire thing. Okay, so please be with me in the 4 lectures. Might be possible total 10 to 12 hours I'm going to complete this entire chapter. Okay, just assume that if you are reading for the first time also, you won't find any problem, but trust me, there will be a difference between full batches and this revision sessions. Okay, so let's start with the bang. Let me start with the basic concept. Okay, so there this 2 concept you already might be knowing. Okay, part number 1, there is something called as budgeting process. Okay, budgeting process. Okay, now please understand what I'm talking about. Might be possible budget will route through this top to low. If the budget is moving from top to low, it is called as authoritative budget. इसको authoritative budget बोलते हैं। Okay, अगर कोई भी budget, let's say आपका budget top से low तक जा रहा है, then obviously it is known as authoritative budget. But what about top से अगर low से अगर top पे जा रहा है, obviously इसको हम लोग बोलते हैं participating budget. Participating budget. Now let me tell you one story. Okay, आराम से एक स्टोरी बता रहा हूँ. Might be possible you might be thinking कि सर टॉप लेवल का इंस्ट्रक्शंस, obviously अगर ये T to L है, then naturally इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिल चुका है, then what low level will do? Low level is just going to follow the things. Okay, they are just going to follow the things. अभी ये तो इनको फॉलो करना है बॉस, that is a separate thing. But अभी क्या होता है मालूम है, when there is low to top, क्या होगा मालूम है, the budgeting process, low level people will be involved in this process. But अभी होगा क्या मालूम है, top level is only going to approve the same. Yes, approve the same. अब now ये तो तेरा basic budgeting process हो गया. Now let me come to the point. इसमें होने क्या वाला है? Okay, point ये होता है कि यार जब कोई भी आदमी, let's say if you are following authoritative budget, अगर आप authoritative budget follow कर रहे हो ना, कुछ चीजें क्या होंगी, please understand my point. Let's say at the start of the year, क्या होने वाला है पता है? At the start of the year, what people are going to do? Let's say people will tell you that boss, I need 10,000 units this year. मुझे 10,000 यूनिट बना के दो. Okay. Now 10,000 यूनिट बना के दो, so obviously this will combine everything. Might be possible you have to invest on raw material. Might be possible you have to invest in direct labor, and might be possible you have to incur manufacturing overheads.
तो बॉस इतना तो करना पड़ेगा ना. ऑब्वियसली अगर इतना आप करोगे उसके बाद ही यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. ओके, प्लीज बीच बीच में चैट बॉक्स पे यस यस लिखते रहना, सो मुझे पता चलेगा दैट पीपल आर लिसनिंग. ठीक है, तो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इतना मेरा सेट हो गया. अब होता क्या मालूम है कि ऑथोरेटिव बजट में मैंने आपको प्लान दे दिया. माइट बी पॉसिबल यू आर सेइंग देख भाई अगर रॉ मटेरियल हुआ ना, लेट्स से रॉ मटेरियल, आई मीन टू से डायरेक्ट मटेरियल, अगर ये डायरेक्ट मटेरियल हुआ सो यू मीन टू से कि यार एक यूनिट अगर हुआ ना, if you want to manufacture one unit then you have to take 2 kg of a raw material. Okay, so basically this is something called as standard input. ये तेरा स्टैंडर्ड इनपुट हो गया. ही इज सेइंग बॉस एक यूनिट के बदले में 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल यू नीड टू परचेस. बट व्हाट इफ अगर 2 kg तू रॉ मटेरियल बोल रहा है, देन माइट बी पॉसिबल यू हैव टू इनकर समथिंग. लेट्स से आई एम गोइंग टू इनकर $2 per kg. So naturally if someone is going to ask you what do you mean by standard cost, तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हुआ, so simply you are going to answer कि देख भाई 2 kg multiplied by $2, this is simply $4 I'm going to incur. I'm going to incur for manufacturing one unit. I hope you are getting my point. Guys, please reply me yes. Okay, so now this is done. Now please understand my point, what I'm trying to convince you. देखो इधर सुनो. Now naturally अगर एक बात मेरी बात आपको समझ में आ गई, so let's say I'm again saying एक यूनिट बनाने के लिए या you need to incur 2 hours, and for making payment of 1 hour you have to invest at least, let's say for example 2.5 per hour. Okay, now please understand my point. Okay, देखो यहाँ पे. So naturally let's say if I have to calculate the standard cost, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना डायरेक्ट लेबर आवर्स लगने वाला है या तो कितना कॉस्ट लगने वाला है, then what you are going to say, sir I have to incur 2 hours and I have to pay $2.5 per hour. So naturally what is my standard cost? I will say my standard cost is 5. I hope you understanding. Fast track boss, fast track. Okay, so now this is $5. So now you understood कि भाई देख कि अगर एक यूनिट तेरे को बनाना है ना, so यार 2 कॉस्ट तो we have to incur, 2 कॉस्ट. Now the first one was raw material जिसका मैंने $4 अमाउंट लेके आया, and the next one was direct labor जिसका अमाउंट मेरे पास $5 था. I hope you are getting my point. Okay, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का फंडा समझ गया. बट अब होता क्या मालूम है, लेट्स टेक वन क्लास की एग्जांपल. अगर इतना समझ में आ गया, नाउ व्हाट विल हैपन, प्लीज अंडरस्टैंड. टू मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने ना आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिया है. ओके, जस्ट सी हियर. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने आपको बजट दिया था. ओके, आई हैव टेकन वन एग्जांपल, इसको आराम से देखना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी on this chatting platform. आराम से देखना what I'm trying to convince you. Now let's say company have a budget of a 10,000 unit. Company ने आपको 10,000 का बजट दिया है, and it says that you need to incur $15. You need to incur $15. Where's my pen? चलो, so it says you need to incur $15 to selling one unit. Now variable expense they have not given, but they have given that your contribution margin is at 20% of the sale. So please do one calculation. 30,000 divided by 10,000. So basically what you will get $3. You will get $3. So you need to incur you are getting $3 as a contribution. Management is saying that boss, look, this will be my budget. But ultimately you need to focus on something else only. Okay, now let's say कंपनी ने देखो 10,000 का बजट तो दे दिया, बट भाई 10,000 का बजट तो मिल गया, लेकिन ये थोड़ी पॉसिबल है दैट इन एक्चुअल यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. तो ये तो मुश्किल हो गया ना यार. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ध्यान से मेरी बात सुनना. लेट्स से आई वाज द मैनेजर, और मुझे जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि एक्चुअल वाज 8,000 यूनिट. Please try to understand.
मैंने क्या किया, my revenue was 1,12,000 and I have incurred my variable expenses 11,800. Next, my contribution margin was 11,200. Obviously, what do you mean by contribution? A contribution is an amount which is recovery towards the fixed cost. Fixed cost 24,000 था and 12,800. Okay, 12,800 was your loss. Now try to understand. Management तुमको simple सा एक चीज बोल रहा है कि भाई actual में हमको loss हो गया. Now please come with me. Do some calculation. मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ that you need to give me answer of few stuff. देखो यहाँ पर. So let's say if I'm talking about variance, आपको क्या बताना है पता है? कौन सा आपको यहाँ पे favorable लगा और कौन सा आपको यहाँ पे unfavorable लगा? Simply I'm asking you the doubt. कौन सा favorable है, कौन सा unfavorable है? Management is saying 1,50,000 but you have incurred 1,12,000. Okay, incur नहीं, revenue कम कमाया. Obviously this will be unfavorable situation. Management को कभी नहीं चाहिए था that your revenue should go down. So अभी अगर 1,50,000 minus 1,112 किया, so you are getting 38,000. 38,000. You don't wanted that. You don't wanted that. So that's the reason this is unfavorable variance. I hope you are understanding my point. Next, variable expenses. Company was incurring 1,20,000. 1,20,000. Sorry, company has told you that please make this at 1,20,000, but you are incurring 1,10,800. You are incurring less. Management will be happy. So 1,20,000, 100, 800. So this is giving you 19,200 and you are happy. So you will say that this is favorable variance. Now let's go on next. Management said that you need a contribution margin of 30,000 but you are actually getting 11,200. Management is unhappy. Management तुमको बोलेगा भाई ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, 3 गुना लगान देना पड़ेगा. So basically 30,000 minus 11,200. So 18,800. You earned less. Management is not happy. So this is management is saying, look boss, you have to say that this is unfavorable variance. हाँ, okay. So management is saying तेरे को unfavorable variance यहाँ पे लिखना पड़ेगा. चलो, unfavorable. Fixed cost company has management have told you to incur 25,000, but you are incurring only 24,000. You will save 1,000. 1,000 what? 1,000 what? 1,000 what? Obviously favorable because you have incurred less. Now next, operating income. Obviously management wanted you to earn 5,000 positive, but you are earning 12,800 negative. Now please understand, minus minus plus हो जाएगा. There is a change. So 12,800 plus 5,000, 17,800, and this is unfavorable. Okay, now come here. ये तो हमने decide कर लिया initial level पे. Now you might be knowing. Just give me a second. Just give me a second. Sorry guys. So now what I was telling you. So what I was telling you. Please listen to me. Favorable, unfavorable तो निकाल लिया. Okay. But एक चीज याद रखना. This what you are doing. You are just comparing one static budget. Now please try to understand. You already know what do you mean by static budget. Static budget is nothing but a budget which is prepared on one level of activity. Static budget is prepared on a one level of activity. Now please try to understand, how can you compare this 10,000 with this 8,000? It is not possible.
let's say you are watching one cookery show and that person is telling you we can make the food for, I'm making food for 5 people, but trust me, you are making food for 100 people. Can you compare this 5 versus 100? Obviously the answer is no, because it is not comparable. How can you compare 5 people with the 100 people? मरेगा बॉस, ऐसा नहीं कर सकता. How can you compare 5 people with the 100 people? Now tell me honestly, I am seeing here 38,000 unfavorable. चलो ठीक है, मान लिया तुम बोल रहा है 38 unfavorable, लेकिन यार tell me one thing, उसने 10,000 पे you have told कि 1500 units, sorry 1,50,000 आया, 1,50,000 आया. So 8,000 पे how can you expect 150? Obviously they have sold lesser units. तो अगर उसने lesser units बेचा है तो revenue तो lesser ही आएगा ना. I hope you got my point. Okay, so that's the reason when you compare static versus actual, this won't give you a proper result. I hope you got my point. This is not going to give you proper result. अरे लॉजिकल है बॉस, 10,000 को 8,000 पहले कंपेरेबल तो बना, जब कंपेरेबल ही नहीं बनाएगा तो कैसे होएगा? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, इतना तो बेसिक समझ में आ गया. सो नाउ लेट्स से इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू द बेसिक फंडा कि ये निकाल क्यों रहा बाय, तो व्हाट यू कैन से, देख बॉस, एक तो पहला जो प्लान किया था, लेट्स से मैनेजमेंट हैज टेकन हैविंग सम प्लान. मैनेजमेंट ने जो प्लान किया था वर्सेस व्हाटएवर यू हैव डन, मैनेजमेंट विल चेक इज देयर एनी प्रॉफिट or the loss, simply speaking, and this profit and loss is known as variances, and variance can be favorable, and variance can be unfavorable. I hope you understood my point. Please मेरे को chat box में कुछ ना कुछ लिखते रहना, so I can just say that whether you are active or not. Okay, so variance will be of two type, favorable and unfavorable. Now what I'm going to do, मैं आपको ना एक sheet दिखा रहा हूँ. Okay, so basically this is a revision sheet which I have made for all of you. Okay, so इसमें highlighted already सब पहले से सब बना हुआ है, and I have given my best thing. Okay, तो जितना में से हो सकता था I have taken all the topics over here. Okay, now please try to understand budget versus budget and variances. Obviously we know. Okay, so now point number 1, what it says managers compare actual performance with the expected budgeted result. Rule number 1, please understand my point. Whenever you are going to say this, you always have to compare actual versus budget. Those who are giving examination from the India and they are doing BCom graduation, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जाम में तुम्हारा पोपट होगा अगर तुमने इंडियन स्टाइल से सॉल्व किया तो. इंडियन स्टाइल में देयर इज अ स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, बट इन यूएस द CMA यूएस दे एक्चुअली डू एक्चुअल माइनस बजटिंग. तो ये चीज प्लीज याद रखना, दिस इज एक्चुअल माइनस बजट, नॉट बजट माइनस एक्चुअल. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. Next point, it says the review and analysis of the variance are done periodically as a control or the performance. Obviously they are going to do periodically ना, रोज थोड़ी क्या करेगा. अब obviously जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि let's say वो तुम्हारे पास 2022 को तुमको बजट देके गया, then normally what he is going to compare quarterly आके तुमसे चेक करेगा. So he is going to check on 31/3/2022 को आके वो चेक करेगा and he will say boss मेरे को डिफरेंस बता, कुछ वेरिएंस है क्या. Okay, now what happens, ये क्यों होता है. Now अगर मैं आपको पूछूं, let's say there is a one product. Okay, अगर कोई प्रोडक्ट है, so इस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट 1 2 3, अभी ये 3 चीजें क्या क्या इवेलुएट ही नीड टू डू. ऑब्वियसली मेरे को वेरिएंस निकालना पड़ेगा, so I will calculate on the product ना, कि प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्शन जाना चाहिए था. So majorly what I need to discuss, एक तो मेरे को कंपनी का रेवेन्यू देखना पड़ेगा, कि whether
what I have decided कि whatever I could have earned, मैं उतना कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा हूँ. Second, I need to evaluate the cost also. Okay, and last but not the least, I have to check the profits also, whether company has made good profits or not. Okay, so now please come here. It says managers of a cost center are evaluated based on the actual cost. How much cost he have incurred. Those who have already studied, please understand there are 4 type of cost centers, if you remember that. Okay, last one is investment center. But I am just going to talk about the product, so that's the reason I am talking about cost centers. Cost center का simple फंडा होगा बॉस, जितना कम cost हो सके उतना cost I need to take. Next I am seeing it says actual cost and how much deviated from the planned cost. जितना planning था, so क्या करना है पता? Planned. What is planned? Planned means your budget. What he is going to compare versus actual. Each and every time I am telling you the same thing. Managers of revenue center are evaluated based on the revenues they have achieved compared to the budgeted revenues. Management of the profit center are evaluated based on the level of profits of unit they achieved comparable to planned level of profit. Obviously starting में मैं तुमको कुछ और बोल के जाऊंगा, last में I need to compare everything whether the transactions are matching or not. Next वो क्या बोलता है? Variances occur when volume, cost and sale price differ from the budget, when the resources are used more or less effectively than planned. मैं इसका simple सा एक example देता हूँ. Please try to understand. If I am saying there is a standard quantity, standard price, then this will be called as standard cost. Hello. Actual quantity, actual price is equal to actual cost. तो मेरे को एक बात बता, सुनना. तो जो भी प्रॉब्लम होगा, either this will be here, either this will be here, either this will be here or here. ओके, कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम ही होगा ना. अगर प्रॉब्लम होता ही नहीं तो वेरिएंस कैसे आता? समझा गया? चलो, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट. गाइस प्लीज जागते रहो. आई नो देयर इज अ वेरी स्ट्रेंज टाइमिंग ऑन विच वी आर डिस्कसिंग द थिंग्स, बट ट्रस्ट मी, ये तुम लोग याद रखोगे. ओके, चलो. वेरिएंस एनालिसिस यूजिंग द मास्टर बजट. पहले तुम्हें एक बात बता, मास्टर बजट कौन से लेवल ऑफ एक्टिविटी में बनता है? तो तुम बोलेगा सर अपना जो मास्टर बजट है ना, ये जो मास्टर बजट है ये 1 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनता है. 1 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनता है. 1 लेवल ऑफ एक्टिविटी. ओके, चलो. Now let's go on next. The master budget, also called as annual budget on the annual business plan, prepare assuming a single level of activity. This level activity is forecasted sales volume. Obviously this is budgeted, my bro. This is budgeted, and it is budgeted on a single level of activity. That was estimated at the beginning of the budget. So basically this is budgeting made at the planning stage. Now let's go on next. Now it says, what are the benefit and limitation of a measuring actual performance based on a master budget? आराम से पढ़ते हैं, सब कुछ आएगा समझ में. I'm not going to leave anything. I'm again saying that in this revision batch now, my tempo will be little higher. मैं थोड़ा फास्ट में बोलूंगा, बट आई प्रॉमिस यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग. सो इतना यू कैन ट्रस्ट ऑन मी. सो ऑब्वियसली ये पढ़ा हुआ है पहले से, बट अभी थोड़ा सा उसको और अच्छे से देख के वी नीड टू फिनिश इट. दैट्स ओनली थिंग. चलो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बेस्ड ऑन द मास्टर बजट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वेरिएंसेस. सर इसमें क्या बजट हम डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं? जैसा हमने टारगेट सेट किया, आज इतनी सेल्स होनी चाहिए और ये भी कंसिडर करेंगे एक्चुअल वर्सेस बजट में? नहीं पूजा. सो बेसिकली सो शी इज आस्किंग कि डेली पे हम लोग डेली पे वेरिएंसेस निकाल सकते हैं क्या? पूजा, दिस विल बी वेरी टफ जॉब. लेट्स से इफ योर डिपार्टमेंट इज वेरी ह्यूज, तो वहां पे एक बंदा, इट इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट. तो क्या होता है मालूम है? सो जनरली इफ यू हैव नोटिस, सेल्स का जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें हमेशा क्या होगा मालूम है पूजा, कि वो लोग को ना क्वार्टरली टारगेट्स मिलते हैं दैट यू नीड टू अचीव दिस मच. उसके बाद क्वार्टर एंड पे दे डिसाइड कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा जाने वाला. ओके, इफ यू विल टेल मी पर्सनली कि इनिशियल लेवल पे मेरे को बताओ, सो पूजा दिस इज वेरी चैलेंजिंग. तो हम इस मोमेंट पे ये नहीं बोल पाएंगे. ओके,
So daily basis, company to company, but my answer will be no. Chalo. Next. So it says performance report based on the master budget can be used to identify the variances that require further investigation. हाँ, अब एक बात बता, let's say मास्टर बजट ना 10,000 यूनिट्स पे था. एग्जाम्पल, ये तुम्हारा मास्टर बजट है. मैं तुमको बोल रहा हूँ, लेट्स से तुम्हारा मास्टर बजट 10,000 यूनिट्स पे था एंड तुम्हारा कंपनी इतना अच्छा है ना कि उसने एक्चुअल्स भी ना 10,000 यूनिट्स पे ही किया. तो भाई लाइफ में तो कोई लफड़ा ही नहीं है. आई डोंट नो तुमको समझा कि नहीं. लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बॉस. आई एम वेरी चिल्ड. मेरे को कोई पंगा ही नहीं है. मैं खुश खुश है. सेम टू सेम हो गया. लेकिन एक बात बताओ, तुमको मैं फिर से बताता हूँ, ये इफेक्टिव तुमको डिसीजन देगा ही नहीं. नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है? However, they do not produce effective management by exception. ये क्या होता है? You already know. Deciding what about the variances. Variances क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया? Exception data, because variance analysis using the master budget does not isolate the variances due to inefficiencies or inefficiencies from the variances due to the volume that is selling or producing more or less than in the master budget. अरे होगा ही ना यार. अभी एक बात बता, तेरे को बजट 10,000 यूनिट्स का दिया and you are making let's say you are making 12,000 units. So how can you compare कि तेरा प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट सेम होगा? और let's say you have made 8,500 units. You cannot say ना यार this will be the same. नहीं बोल सकते ऐसा ना यार. Okay, so basically ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. I hope you understood. Guys, please chat box में लिखना if you understood this. Okay, now let's go on next. चलो. Now अभी मैंने आपको बार बार एक चीज बोली थी कि यार क्यों कर रहा है ऐसा. 10,000 को कंपेयर 8,000 से क्यों कर रहा है? मरेगा. हाँ, अगर मुझे कंपेयर करना हो ना, सो यार एक चीज बहुत मस्त कर सकता हूं मैं. इफ पॉसिबल मैं एक काम करता हूं. मैं ना अगर मैंने 8,000 बनाया ना, तो मैं 8,000 यूनिट्स पे कंपैरिजन करता हूं और मैं इसको बोलूंगा दैट दिस इज माय फ्लेक्सिबल बजट. दिस इज माय फ्लेक्सिबल बजट. नाउ अब मेरी बात समझ. गाइस, दोज हु आर माय स्टूडेंट, इज इट इफेक्टिव द वे वी आर गोइंग? या यू वांट मी टू गो स्लो और फास्ट? प्लीज टेल मी. मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, मेरा शक्ल ऐसे ही दिखेगा बिकॉज थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए. Should I increase my speed or decrease my speed, or it is good? Chalo, now let's say I want to make flexible budget of it 8,000. So now this was budget. This is already happened. It has happened. And what I am doing, it is known as should have happened. Should have happened. ओके, सो दिस इज शुड हैव हैपेंड. एग्जाम में तुमको समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा, शुड हैव कितना होना चाहिए था. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. Standards for actual output. Now please try to understand what I am trying to convince you. 8,000 unit. Now first of all, how much units you made? So you will say, sir, I have made 8,000 units. What should be the selling price at this moment? You will say, sir, selling price 15 होना चाहिए था. Now please understand what I did. Please understand. This is actual output. And what I'm taking standard rate. I'm taking standard rate. Okay, chalo. So now what should have happened? 8,000 multiplied by 15.
So this is giving you 1,20,000. This should be your revenue. ये आपका revenue होना चाहिए था. Now next, let us focus on contribution margin. So it says this should be 20% of sales. What is your 20% of the sales? So you will say, sir, this is 1,20,000 का 20%. करो 24 आएगा. So this is 24,000. So naturally this will be your balancing number, which is 80%. 1,20,8. This is giving you 96,000. 96,000. So 1,20,000 minus 96,000. This is giving you 24,000. And my fixed cost was management has said you to incur 25. Okay, because fixed cost will remain the same at all the levels. So this is 25,000. This is 25,000. So now what is, I am getting loss of only 1,000. Okay. So basically, as per standard, the loss should be of 1,000, but unfortunately you have incurred 12,800. That is very bad. So now let us analyze what we are doing at this moment. Okay, please see here. What I want you to do, a simple equation. Please try to understand. I want you to do. It is not visible. Just a second. Chalo, let's do one thing. What I want you to calculate actual versus flexible. Means what you have done, what you should have done. Chalo. So now 1,12, and you should have earned 1,20,000, but you have earned 1,12,000. Obviously there is a difference of 8,000, and I will say that this is unfavorable. This is unfavorable. Hello. चलो, आई एम सॉरी, बीच में ना थोड़ा सा हैंग हो गया था.
तो इसके वजह से ना मैं बार बार ये पूछा था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम निकल गया। चलो, सो आई वाज सेइंग कि यार 8000 अगर यूनिट्स है, चलो अगर आप सॉरी, राइटिंग के टाइम पे हाफ दिख रहा है, सिमरन सिंह अपना फोटो ऊपर ले लो थोड़ा, राइटिंग के टाइम पे हाफ दिख रहा है, ऐसा कैसे? चलो आ जाओ, सुनो सुनो, प्लीज 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 बी विथ मी। ओके, देखो, सो व्हाट आई एम सेइंग, ये 8000 अनफेवरेबल है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट वाज एक्सपेक्टिंग यू टू गेट 1,20,000, okay, but you have earned 1,10,000. Management is not happy with you. Okay, so now next, management wanted you to incur 96,000, but you have incurred 100,800. Very bad. So basically 4,800 again. This will be unfavorable. Okay, does not acceptable. Now next, management wanted a contribution of 24,000. You have got only 11,200. Bad, very bad. 24, 11,200. So basically this is 12,800 unfavorable. Okay, and next, management wanted you to incur this much, but you have incurred only this much. So okay, so this is 1,000 profit because you have incurred less. Okay, so this is a positive, so I will say that this is favorable. Now next, you have got a loss. Abhi let's say 12,008, chalo, so 1,000 loss flexible, but you have incurred 12,800, correct? So naturally what will be the answer? Minus minus. Okay, what will be the answer? My maths is very weak, boss. 11,800 was the difference. Okay, so even this is unfavorable only. Guys, please comment in chat box whether this should be 13,800 or it is 11,800. मेरे को भी नहीं पता, I'm very weak in maths. चलो next, so basically 11,800 का पंगा हो गया बॉस, इतना नहीं होना चाहिए था लॉस, जो लॉस इनकम हो गया. So 8,000. So now what is happening? If you notice, now you can compare boss. So 8,000 units versus 8,000 units was very logical, ठीक है? क्योंकि so normally अभी ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, please try to understand. Okay, ध्यान से मेरी बात समझना. I'm teaching you level 1 variances. Please come here. Level 1 variances. First is known as static budget variance. Static budget variance. Next, I'm going to teach you flexible budget variance. Flexible budget variance. And the third, I'm going to teach you sales volume variance. Please come with me. When someone is going to ask you what is the difference between static, you are just going to say that it is actual minus static budget. Static budget. Actual को budget मत लिखना, पोपट होगा. Actual is not a budget. I have seen few students are saying actual budget minus static budget. Actual budget नहीं होता है भाई, पोपट होएगा, मत करना ऐसा. चल next, flexible budget variance. Actual minus flexible. Sales volume variance, this will come again, but मैं थोड़ा सा आपको hint दे रहा हूँ. Please come here. This will be flexible minus actual. Okay. So now these are 3 level variances: actual minus flexible, actual minus static, static budget variances, actual minus static,
Flexible budget variance is actual minus flexible. Sales volume variance is flexible minus actual. Okay, so these are something called as level 1 variances. This I have got this levels as per Hawk. Okay, Hawk ने इसको bifurcation किया, बाकी किसी publisher ने इसको bifurcation नहीं किया. Okay, so now please understand. Now next, please come with me. Okay, अभी I'm going to tell you कि question कैसे पूछेगा. Question कैसे पूछेगा. Let's take example. I'm saying एक कंपनी है, उसने बजट किया था 8000 यूनिट्स. For 1 unit, they wanted to incur, let's say, 2 hours, and 1 hour will be equal to $2.5. Okay, this is a budget. This is a budget. Company manufactured 10,000 units, and for 1 unit, company have taken 2.2 hours. 2.2 hours. I hope you are understanding. Okay. Next, and company have paid for 1 hour. Company have paid $2.3. Understand my point? This is your situation. They are asking you calculate flexible budget variance. They are telling you to calculate flexible budget variance. आ जाओ आराम से देखते हैं. Flexible is all about actual output. Yes, चलो. What was the actual output? You will say 10,000. How much hours you should have taken? How much hour you should have taken? So you will say, sir, 2 hours. How much rate you should have taken? So you will say, sir, 2.5. So 20,000 multiplied by 2.5. This is coming to $50,000. This is your flexible direct labor. Flexible direct labor. Now next. Please see here. What was sorry मैं एक चीज भूल गया कि वो flexible budget variance bracket में लिखेगा direct labor का बता. So now let's calculate actual. How much actual you made actual incurred? So you will say, boss, 10,000 2.2 multiplied by 2.3. So please calculate. So it's 10,000 2.2 multiplied by 2.3. This is 50,600. Now please understand, this was your actual 50,000 and 50,600. क्या हुआ? फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल या अनफेवरेबल? चैट बॉक्स में प्लीज लिखना. ठीक है, चलो. फ्लेक्सिबल डायरेक्ट लेबर 50,000 तुमने इनकर किया 56. ऑब्वियसली दिस इज अनफेवरेबल. Obviously this is unfavorable. How much? $500. I hope you got this. $500. Now let's say same sum. Company is saying that fixed cost you have to incur 50,000. 50,000. Company actually incurred 52,000. My question to you is very simple. What is the static budget? Sir, static is nothing but 52,000 which is actual minus 50,000 because the company have given the same budget. Answer is 2,000. 2,000 unfavorable. Sir, what is the flexible budget variance in with respect to fixed cost? With respect to fixed cost, my answer is 0. Hey, bhai, how it is 0? Sorry. Extremely sorry. No.
not 0 boss. Same यहाँ पे भी you need to do the same thing. चलो मिटना भाई जल्दी. Okay, so now flexible budget में what you will do, you will say actual minus flexible. Can I say fixed cost is not going to change, so this will be 52,000 minus what 50,000. Again you will say that 2,000 unfavorable. Sir, what is the sales volume variance with respect to fixed cost? Please understand. How much you are going to write in flexible? 50. Just a second, I have written wrong. It should not be flexible. It should be static. Very big mistake here. It is not flexible. It should be static. Sorry. It should be static. Okay. So now the calculation will be 50,000 minus 50,000. This will be 0. I hope you are getting my point. This will be 0. Correct? Chalo. 50,000, 2,000 unfavorable, 2,000 unfavorable, because in flexible, in static, you will take the same amount. In flexible, the amount is not going to change. I hope you are getting my point. Correct? Chalo. Now, this is done. Now, let's understand the first use of flexible budget to analyze performance. Okay. We are just going to read a concept. हो गया खत्म. Budget variance analysis using flexible budget allows the manager to separate volume variance from the efficiency variance. Okay, मैं आगे चल के सब बताऊंगा क्या होता है. Okay, flexible budgets are budget present for the multiple sales volume. Okay, you can make for 8,000 units. I'm writing you example also. 8,000 units. You can also make for 10,000 units. You can go for 12,000 units also. Any level of activity to compare, because obviously this is completely based on actual output. So obviously what you can do, actual output जब तक नहीं होगा, how you are going to take it. Okay, so आप उसको नहीं ले पाओगे. Next, flexible budget variances are better measure of performance than a master budget, no doubt. इसको स्टार मार्क करो, कभी ना कभी क्वेश्चन में पूछेगा. Because they compare the actual revenues and the actual cost with the budgeted revenues and budgeted cost from the same level of output. Same level of output. Okay, please highlight this. Chalo, next. Okay, now let's take 2 minutes of break. Okay, थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद we will be back with the sales volume, sales variances. Chalo, please give me the break. Let's take break of 2 to 5 minutes. After that we will be back.
चलो आई एम बैक स्टार्ट चलो चलो लेट्स स्टार्ट ओके सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या चालू करना है अभी सेल्स वेरिएंस स्टार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ एक चीज पहले तो माइंड में ध्यान रखना प्लीज सेल्स वेरिएंस इज ऑल अबाउट इनकम वेरिएंसेस प्लीज बी रिमेंबर दिस इनकम वेरिएंसेस है अभी नाउ इनकम वेरिएंसेस है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू सिंपल फिर से वही चीज एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड और यू कैन से बजट ये फंडा चेंज नहीं होने वाला है बॉस दिस इज गोइंग टू बी सेम नाउ अभी क्या क्या होगा मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ एग्जांपल लेने के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी पूरा चलो मैंने क्लास वर्क के लिए स्पेस भी छोड़ा सो यहाँ पे वी कैन चेक आराम से एक चीज बता दूं ध्यान से मेरी बात सुनना देखो लेट्स टेक वन assumption कंपनी हैव few प्रोडक्ट्स ओके उसके कुछ प्रोडक्ट है A B and C and company have some prices also of this product let's say A has to be sold at $10 B is on 20 and C is at 30 okay इतने में उसको सेल करना पड़ेगा now please come with me let me check whether voice is active or not yes voice is active now चलो ध्यान से देखना एंड आई एम सीइंग कंपनी ने बोला है दैट यू हैव टू सेल 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी एंड 3000 क्वांटिटी नाउ टेल मी ऑनेस्टली इफ आई एम आस्किंग यू टोटल बजटेड सेल्स तो ये कितना होगा व्हाट इज द टोटल बजटेड सेल्स सो नाउ प्लीज कैलकुलेट विद योर कैलसी फटाफट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 सब लोग साथ में लेना प्लीज 10,000 10,000 2,000 multiplied by 20 this is 40,000 40,000 3,000 multiplied by 30 this is 90,000 okay so if you notice your total sale is budgeted sale is coming to 10,000 40,000 and 90,000 this is giving you 1,40,000 I hope you understood this 1,40,000 ठीक है आई थिंक कुछ हैंग हो गया क्या फिर से लेट मी चेक आई थिंक मेरा लाइव ना कुछ ज़्यादा ही पीछे हो गया ओके आई जस्ट होप आप लोग मेरे साथ में हो ठीक है चलो लेट्स सी हियर 90,000 है बट व्हाट हैपेंस कि यार जब मैं ये निकालने जा रहा हूँ ना माइट बी पॉसिबल मेरा यूनिट्स मैच नहीं हो रहा सो लेट्स से दिस वाज बजटेड जो कंपनी ने बजट किया था द डिटेल्स विच दे हैव गिवन इज फॉर बजट बट एक्चुअल में देयर कैन बी समथिंग डिफरेंस ना एक्चुअल्स लेट्स से मैं एक्चुअल क्वांटिटी व्हाट आई हैव सोल्ड मैंने एक्चुअल प्राइस कुछ और लगाया है एंड मेरा टोटल एक्चुअल सेल्स है टास नाउ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी नाउ लेट्स अज्यूमिंग मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे लेट्स टेक एग्जांपल आई हैव सोल्ड 1200 आई हैव सोल्ड हियर 1800 एंड आई हैव सोल्ड हियर 2800 now the price was I have sold at 12 I have sold at 18 and I have also sold this to 32 now let's take a total cost so 1200 multiplied by 12 this is coming to 14,400 14,400 1800 multiplied by 18 this is coming to 32,400 2,800 multiplied by 32 this is coming to 89,600 GT I think this is coming to 136,400 चलो नाउ लेट्स सी हियर ओके आराम से एक चीज समझना समटाइम्स पीपल विल आस्क मी टोटल सेल्स वेरिएंस कितना हुआ टोटल सेल वेरिएंस कितना हुआ
if someone is asking me total, मैं उसको बोलूंगा देख बॉस, टोटल का मतलब भी यही हुआ एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स. So let's give a calculation. 136,400 minus 1,40,000. कंपनी ने मेरे को बोला दैट आई हैव टू सेल 1,40,000, बट यार उतना सेल ही नहीं हो पाया. मैंने 136 माइनस 1,40,000, तो नेचुरली मैंने कितना कम सेल किया. सो 136,400 माइनस 1,40,000, दिस इज गिविंग यू 3,600, एंड दिस इज अनफेवरेबल, नॉट एक्सपेक्टेड. नाउ अगर एक मेरे को बात बता, अब मैं तेरे को टोटल सेल्स वेरिएंस बता रहा हूं, टोटल सेल्स वेरिएंस बता रहा हूं, और मैं तेरे को बोल रहा हूं कि 3,600 का टोटल अनफेवरेबल आया. एज अ मैनेजमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो फिगर आया ना, ये ऐसे ही थोड़ी टपका होगा, कहीं ना कहीं से तो आया होगा. व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्राइस ऑल्सो, कि कहीं प्राइस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और either you need to check the quantity also कि boss there has to be some problem in the price or the quantity. Now let's check कि what we can do. आ जाओ, let's check this. Just a second, I'm still thinking कि मैं पीछे तो नहीं हूँ. एक सेकेंड. No, good. Chalo. So now basically I need to identify the price first. Okay. So firstly I need to identify the price. Secondly I am going to check about the quantity also. ठीक है. चलो let's check. Please आओ मेरे साथ में. मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ सेल्स प्राइस वेरिएंस, या प्राइस में क्या डिफरेंस था. अब naturally when I'm saying that price का difference, I need to say that actual price और standard price में क्या difference था, and secondly जितना quantity मैंने sold किया actually I need to calculate on that. So that's the reason I'm going to use actual quantity. I hope you know this. Revision lecture है boss. चलो, now let's focus on this. What was my A, B, C? आराम से देखते हैं. Actual price कितना था? So this will be 12. What is the standard price? 10. मेरा ये प्राइस कितना था, बी का कितना था, 18. हाउ मच मैनेजमेंट टोल्ड मी, 20. ये कितना था, ये मैंने इनका किया, सॉरी आई हैव सोल्ड इट फॉर 32. मैनेजमेंट मेरे को बोला 30 पे करने के लिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. चल आजा साथ में. एक्चुअल क्वांटिटी कितना था, सो इसका 1200, इसका 1800 और इसका 2800. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कैलसी में ऐसा कुछ आया तो जीटी फंक्शन यूज करना, मेरे को तेरा मैथमेटिक्स पे भरोसा नहीं है. ठीक है, चलो आ जाओ. मैंने 12 किया, मैनेजमेंट ने मेरे को 10 बोला था. आई डिड गुड जॉब. 12 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1200, आई एम गेटिंग 22,400. मैनेजमेंट मेरे को 12 बोला था, सॉरी मैनेजमेंट मेरे को 10 बोला था, मैंने 12 में बेचा. आई डिड अ गुड जॉब. दिस इज फेवरेबल. I hope you are getting my point. 18 minus 20 multiplied by 1800. मैनेजमेंट मेरे को बोला 20 में बेचने के लिए, मैं 18 में बेचा. मैं पागल है. 3,600 अनफेवरेबल. नेक्स्ट, मैनेजमेंट मेरे को 30 में बेचने बोला, मैंने 32 में बेचा. 32 minus 30 2,800. 5,600 फेवरेबल. अभी ये सब करने के बाद डायरेक्टली जीटी मानना. जीटी अरे सॉरी 2,400 3,600 सॉरी 2,400 plus 5,600 minus 3,600. This is coming to 4,400. क्या फेवरेबल. ठीक है, चलो. This was the all information about the price. Now let us focus on sales volume variance. वॉल्यूम वेरिएंस. अभी वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम का मतलब भी क्या होता है, क्वांटिटी. ठीक है, चलो. एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल या स्टैंडर्ड. ऑब्वियसली स्टैंडर्ड बॉस क्वांटिटी को कम कंपेयर करता है. आई एम गोइंग टू टीच यू दिस इन दिस मेथड आल्सो. जब डायरेक्ट मटेरियल आएगा तो उसमें वी विल लर्न. एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस. चला जा फटाफट. ए
BC. चलो आई नीड टू सी सम इंफॉर्मेशन. ए का एक्चुअल क्वांटिटी कितना 1200, बी का कितना 1800, सी का कितना 2800, माइनस 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 1000 2000 1000 2000 3000. ओके नाउ चेक कर. अभी आजा कैलसी पे फिर से जीडी फंक्शन यूज करेंगे. 1200 माइनस 1000. ए भाई मल्टीप्लाई कौन करेगा? मल्टीप्लाई 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 10 20 30. चलो फिर से 1200 माइनस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10. दिस इज गिविंग यू 2000. मैनेजमेंट टोल्ड मी टू सेल 1000. मैंने 1200 बेचा. फेवरेबल ब्रो. 1800 माइनस 2000. मैनेजमेंट 2000 बोला, मैंने 1800 ही बेचा. वेरी बैड. 4000 अनफेवरेबल. नेक्स्ट 2800 माइनस 3000. मैनेजमेंट 3000 बोला, मैंने 2800 ही बेचा. वेरी बैड. 30. ये आता है मेरा 6000. एक मिनट, ये अनफेवरेबल था ना? ये अनफेवरेबल है, ये भी अनफेवरेबल है. चलो मारो इसका टोटल. ये आया 8000. 8000 अनफेवरेबल. अब प्लीज मेरी बात समझ. इधर व्हाट वाज द प्राइस वेरिएंस? यहां पे देख. सॉरी लाइन ठीक से नहीं मार पाया मैं. हाँ चलो लेट्स अंडरस्टैंड. चलो प्राइस वेरिएंस कितना आया? यू विल से सर 4400 फेवरेबल. ये कितना आया? ये 8000 अनफेवरेबल. नाउ टेल मी वन थिंग. 8000 माइनस 4400 3600. 3600 आ रहा है. So obviously can I say total sale is divided into two parts. Okay, कौन सा टोटल प्राइस वेरिएंस और टोटल वॉल्यूम वेरिएंस. नाउ अभी समझ. एक शॉर्टकट देता है. सुन शॉर्टकट. जब भी तू वेरिएंस की बात करे और वो इनकम वेरिएंस हो, मतलब सेल्स वेरिएंस हो, तो मेरी बात समझ. दो नंबर्स आएगा अगर आंसर पॉजिटिव आएगा. सुन ध्यान से. एग्जाम्पल देख. 1200 माइनस 1000. अगर आंसर पॉजिटिव आया देन दिस इज फेवरेबल. अगर आंसर नेगेटिव आया देन दिस इज अनफेवरेबल. अगर आंसर पॉजिटिव आया देन इट इज फेवरेबल. आंसर नेगेटिव आया देन दिस इज अनफेवरेबल. अनफेवरेबल. ओके नेक्स्ट. अगर लेट्स से कोई वेरिएंस है और वो वेरिएंस एक्सपेंस का है, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू. प्लीज चेक हियर. अगर आंसर माइनस में आया सो दिस इज फेवरेबल. अगर आंसर पॉजिटिव आया देन दिस इज अनफेवरेबल. उल्टा. इनकम में सीधा, इसमें एक्सपेंस में उल्टा. अगर पॉजिटिव आया तो अनफेवरेबल, अगर नेगेटिव आया तो फेवरेबल. आई होप तेरे को समझ में आया. बोलना. आई होप तुमको समझ में आया ये. समटाइम्स आई फील कि फिर से ये हैंग हो गया है. नहीं हुआ. चलो ओके लेट्स स्टार्ट. ये दोनों आया समझ में? चलो प्लीज राइट मी इन द chat box whether you understood this or not. Please tell me. चलो now let's focus on next. नहीं पहले कुछ पढ़ लेते हैं इसके ऊपर.
So it says sales variance analysis can be used to evaluate the effectiveness of the entity, identification of the target markets. Okay, क्या तुम कमा नहीं पा रहे हो वो अपने को देखना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट. And its strategies to capture those market. What we can do, अगर example unfavorable बार बार आ रहा है, then I need to check always boss की problem कहाँ पे आया. The sales variance is a difference between the actual sales revenue and the budgeted sales revenue. Two main components are the sale price variance and the sales volume variance. ये हो गया बॉस. एक और चीज मेरे को पढ़ाना है आपको, सेल्स मिक्स, जो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल होने के बाद. चलो, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ओके, सबको मालूम है, व्हेनेवर आई स्टार्ट दिस चैप्टर मैं सबसे पहले सबको यही बताता हूँ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है. ये तुमको अगर सेक्शन सी का थ्योरी क्वेश्चन पूछा तो उसमें ये क्वेश्चन बॉस आना ही आना है, पूछेगा ही तेरे को. सो चल आजा देखते हैं इसमें बेसिकली क्या है. Managing by exception is a simple concept that if you are getting any kind of differences, then you report. Then you have to report. Simple boss. अगर मेरे को कोई भी difference मिला, then I have to report. Now theory question है, आराम से देख. Managing by exception is a practice in which managers focus on the areas that have a largest variance from the standard or budget, whether it is positive or the negative. अब तुम मेरे को बोलेगा कि सर पॉजिटिव आया तो छोड़ना, नेगेटिव पे फोकस कर, ऐसा नहीं होता है ना. अभी एग्जाम्पल एक बात बता, कोई एक मटेरियल था जो मैनेजमेंट तेरे को बोला 10 रुपए का लेके आ, लेकिन तू उसको लेके आया 12 रुपए का. तो सुनना, तो मैनेजमेंट तेरे को बोलेगा तू पापी है, तो ये तेरा नेगेटिव आया, राइट, तेरा नेगेटिव आया. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस चक्कर में जहाँ पे 1000 यूनिट्स मैनेजमेंट ने बोला था ये बजट था, लेकिन अभी क्या हुआ मालूम है, तेरे अच्छे यूनिट्स की वजह से तेरा सिर्फ 700 यूनिट ही एक्चुअल खर्चा हुआ. एक्चुअल में इतना ही गया. सो ऑलवेज द पॉसिबिलिटी इज देयर. अगर पॉजिटिव भी है तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया. इट हैपेंस बॉस, इट हैपेंस. ठीक है, सो दैट्स द रीजन आपको ये देखना पड़ेगा. The objective is to focus the efforts of the problem areas that require analysis, correction. Analysis of a both favorable and unfavorable variances can lead to performance improvement. अरे दोनों करने का. Normally industry benchmark क्या पता है, प्लस एंड माइनस 5%. अगर माइनस आया तो भी चेक करो, प्लस आया तो भी चेक करो. ओके, नाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम मैंने तुमको पहले से ही बता दिया था. स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है. ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने चलो एक चीज बताता मालूम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट बात हुआ था अपना. ठीक है, a standard costing system is a accounting system that captures standard cost per unit of output. मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, पता है, अगर डायरेक्ट मटेरियल तेरा 1 kg है और उसको बनाने के लिए तेरे को 1 kg लेने के लिए $5 लगता है. So normally this will be $5. Okay, so it says it can be used as a job order costing system or a process costing system. ये process costing में तुमको सेक्शन डी में पता है. जॉब ऑर्डर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि we have to charge on WIP. याद आया कि नहीं, जंक्शन होता है WIP, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल, पढ़ा है बॉस. ठीक है, चल नेक्स्ट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम आर नीडेड व्हेन द कंपनी यूजेस अ फ्लेक्सिबल बजटिंग. चाहिए बॉस, क्योंकि उससे तो मल्टीप्लाई होएगा. एंड वन इज यूजलेस विदाउट द अनदर. एक बात पता, स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं रहेगा तो फ्लेक्सिबल बजट का अमाउंट कैसे मल्टीप्लाई करेगा, समझ रहे हो. Under standard costing, costs are applied to each unit of the product as follows. अभी देखिए वो क्या बोलता है. Standard input is a quantity of input allowed for the 1 unit of actual output. मुझे एक बात बता, मैंने देखो अभी क्या बोला था, पता है वो 10,000 वाला एग्जाम्पल, 10,000 वाला एग्जाम्पल. सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बार बार देखो एक ही चीज समझा रहा हूँ कि तेरे को हमेशा एक्चुअल आउटपुट जो भी है ना उसके हिसाब से यू नीड टू कैलकुलेट. Standard price of a unit is a input is a estimate price per unit of a input used in a production of a input. ये इधर पे बुलेट नहीं होना चाहिए था, सॉरी. कैन आई से, सुनना एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. फॉर 1 यूनिट, ओके, फॉर 1 यूनिट you have to use 2 kg of material A and जो material A है वो 1 kg मिलता है $10 का. So what is the standard cost? So you will say, देख भाई
पहले तो एक यूनिट बनाने के लिए मुझे 2 kg जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को पर kg इज $10. So can I say this is nothing but a $20? हेलो. नेक्स्ट, अगर एक यूनिट के लिए मुझे 2 घंटा लगता है ऑफ स्किल्ड लेबर्स ना, मुझे एक बात बता, अगर मैं देखो बोलूँ कि मैं 1 घंटा काम करने का आई पे $20. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर लेबर? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर लेबर कितना आएगा? सो यू विल से 2 hours multiplied by 1 multiplied by $20. This is coming to $40. ठीक है. चल, और स्टैंडर्ड कॉस्ट और भी इम्पोर्टेंट है. मैं कैसे तुमको बताता हूँ. एक चीज़ तुमको निकालना पड़ता है विच इज़ नोन एज प्री डिटरमाइंड रेट. ये बहुत बार आया है. इसको कैसे निकाला था, कैसे निकलता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी. जो भी तुम्हारा रेट आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन यू विल गेट टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. आई होप यू गॉट दिस. सब पढ़ा है बॉस, सब पढ़ा है. फर्स्ट टाइम कुछ नहीं पढ़ रहे हम लोग. ये समझा क्या सबको? प्लीज टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? चलो, there is one theory question is there. Why we require, what is the purpose of standard costing system? एकदम आराम से देखते हैं. चल, सब आता है, we just need to understand. क्योंकि कभी कभी अगर MCQ में पूछा ना, so we should be knowing कि आंसर है क्या इसका. Okay, let me keep my phone. Where should I keep my phone? I'm keeping my phone over here. नहीं, कहाँ जा रहा है? Now let's go on next. Purpose of a standard costing. A standard costing system is used to estimate the allowed cost of the production process. It starts with estimating the standard materials, labor, manufacturing overheads for the production of a 1 unit of output. Please understand my point. 1 unit of output से ही तेरे को निकालना पड़ता है. इसके बाद you can multiply this with actual production, then recorded at the standard cost and compared with the actual cost at the production at the end of the accounting period. The system serves the following purpose. Why I am doing this? Let's understand. So there are 4 points. First of all, cost control. Obviously, if I am giving you budget, तो तुम्हारे पास कुछ तो नंबर होगा ना जिसके बेसिस पे you can work. मतलब तुमको मालूम है that boss इतना ही बोल रहा है incur करने के लिए, then you will incur only that much. A standard costing system is useful for the product costing and the cost control. Next, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. मैं आज जाके स्टैंडर्ड दूंगा तभी जाके तुम्हारे एक्चुअल को कंपेयर कर पाऊंगा, अदरवाइज कंपैरिजन कहां से होएगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलाउज द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड थ्रू द अक्यूमुलेशन ऑफ बोथ एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट. मतलब कैन आई से टोटल एक्चुअल, भाई क्या लिख रहा है? आई विल से द टोटल एक्चुअल कॉस्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. नेक्स्ट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट. अगर मेरे को लगेगा बार बार कोई ना कोई मिस्टेक हो रहा है, देन बॉस आपको ये देखना पड़ेगा कि मिस्टेक किधर होता है. मैनेजमेंट कैन इंप्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस यूजिंग द पीरियोडिक इवैल्यूएशन एंड द रिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट, simplifies bookkeeping. Only records of the quantities are kept and the cost is the standard cost set for the period. For example, in the process costing, when the large quantities of a similar item are produced, the cost of each equivalent unit is determined standard cost, eliminating unnecessary unit of cost fluctuation. Okay, अगर तुमको मालूम है कि एक ही यूनिट पे तुमको काम करने का है, then obviously boss
तुमको ये चीज पता है दैट इसी रेट पे तुमको काम करना पड़ेगा. ओके, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज. चलो, वेरिएंस कैलकुलेशन यूजिंग द स्टैंडर्ड. अरे बॉस एक बात बता, जब तेरे पास अगर ये स्टैंडर्ड होगा तभी तो जाके तू एक्चुअल को कंपेयर करेगा. ओके, सो बेसिक स्टेटमेंट आई हैव गिवन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज अटेन रियलिस्टिक. चलो, okay, the objective of using the standard costing system is to attain realistic predetermined cost for the use of a budget process planning and the decision making. Obviously, let's say if I'm a manager and if I'm telling you that boss, look, you should have incurred $5. Just a second here. ओके, चलो. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर लेट्स से इट्स अ $5, अब मेरे को मालूम है कि ये $5 है, देन नेचुरल सी बात है ना बॉस कि मेरे को मालूम है कि अगर ये 6 गया सो देयर इज अ प्रॉब्लम. इफ इट इज गोइंग 4 आल्सो तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये 4 आ कहां से था. टू बेटर कंट्रोल ऑपरेशन, फ्लेक्सिबल बजट कॉस्ट वेरिएंस कैन बी डिवाइडेड इनटू मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंसेस. तभी तो जाके मेरे को टोटल मिलेगा. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. 4 बार तो होता ही है ना, ये 4 वेरिएंस तो निकालना ही पड़ता है. कंपेयरिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द इनपुट, comparing actual cost of the input with those allowed per budget standard provides information on the efficiency and effectiveness of the operations. Okay, चल, मतलब बेसिकली उसने वही बोला. सुन, मैं क्यों पढ़ा तो पता, माइट बी पॉसिबल अगर थियरी में बत्ती ऑन द स्पॉट तुमको जलना चाहिए कि ऐसा भी कोई स्टेटमेंट था. प्रोडक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू वेरिएंस एनालिसिस. नाउ टेल मी वन थिंग. अभी जैसे इफ यू सी दिस स्टेटमेंट, चलो थोड़ा सा कुछ चीजें समझते हैं. प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर. व्हाट्स रॉन्ग विद माय पीसी? चल, नाउ लेट्स सी हियर. जस्ट अ सेकंड, व्हाट हैपेंड? Tell me one thing, एक छोटा सा चीज समझते हैं. कम हियर. Now, if you are telling me that this 11,800 total variance is unfavorable, then naturally boss you want to know ना कि ये unfavorable आया कहाँ से. You have to check ना कि unfavorable आया कहाँ से. ये ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं से भी आ गया. So naturally you need to evaluate everything. So basically we have already seen the sales variances. Now again we have to check variable expenses. Again we will see this contribution margin. Then we have to check the fixed cost. Then we will check the operating income. So obviously ये सब चीजें you need to evaluate. तो variance analysis में you have to cover everything, every points you need to check. I hope तुमको ये समझा. ठीक है? Now come here. Standard cost भी you got to know. ये भी हो गया, ये theory भी हो गया. Now चलो focus on this. Direct material and direct labor variances. Very simple boss, very simple. Okay, now I think most of the people have seen that he is going to take direct material and direct labor. That's the reason people have left. Very bad. Chalo, direct material and direct labor variances. For the direct material, direct labor, two variables are typically calculated: a price rate variances and the quantity efficiency variances.
The price rate variance is related to the amount paid compared to the actual rate, and the quantity efficiency is to be compared with the actually resource consumed. Okay, so now let me take one basic example for you. Chalo. Now let's say a company have made some standards. Company saying if you have to manufacture one unit, you need material X, you need material Y, and you need material Z. X you can use 2 kg, Y you can use 3 kg, and Z you can use 4 kg. Okay, simple. They have given you the standard. Now please understand what happened. You had made 20,000 units. You made 20,000 units. Now what I need actual quantity, I need actual rate, and I need total actual cost. Okay, so now I'm just taking some basic examples for you. So basically he have used 39,000, and there is some rate also, 5, 6 and 7 per kg. Per kg, per kg, per kg, per kg, per kg. Okay? Chalo. Now let's go on next. 20,000 60. Company have taken 65,000. 20,000 multiplied by 4. Say company have incurred 78,000. The rate company has taken 5.5. The rate company has taken is 5.8. The company have taken the rate 7.5. Okay, so this is the actual which company have taken. Chalo, 39,000 multiplied by 5.5. This is 2,14,500. Then the next is 65,000 multiplied by 5.8. This is coming to 377. Then 78 multiplied by 7.5. This is 585. Let me take the total. So it is coming to 1176,500. Notice this. This is the actual cost. Okay. Now please come here. Please come here. Please come here. Now I cannot compare one unit with 20,000 unit. What I need to create a flexible budget for actual output. What is the actual output? 20,000 units. 20,000 units. What I need a standard quantity. I need standard rate. I need total standard cost. Now please understand my situation, what I'm trying to say. What should be the standard quantity? So it says for X you need 2 kg. So I have to calculate something like this. 20,000 multiplied by 2. Why? Because for creating one unit I need 2 kg of raw material. For this 20,000 I have to use Y 3 kg, and for this 20,000 multiplied by 4 kg I have to use. This will give you 40,000. This will give you 60,000. This will give you 80,000. Now standard rate they have already given 5, 6 and 7. Now please let's calculate total standard cost. So 40,000 multiplied by 5. This is 2 lakhs. 60,000 multiplied by 6. This is 3,60,000. 80,000 multiplied by 7. 5,60,000. Cheating. 11,000. 11,20,000. Chalo. Now I have given you every details. Okay. So now let's say if someone is going to ask you how you are going to calculate the direct material variance. Total variance. So you are going to say total actual cost minus total standard cost. Chalo, please come here. Now. This is expense. So I have told you that variance you will calculate something like this. How? If your answer is coming positive, then this is unfavorable. If your answer is coming negative, then this is favorable. I hope you got this. Okay? Chalo.
total actual cost. So my actual was 1176,500 and my standard was 1120. Chalo, please come with me. 1176 minus 1120. This is giving you 56,000. Answer is positive, unfavorable, my friend. Now again, I have told you, then your material always this cost, material cost variance will be divided into two parts. Material price variance and material usage variance, or you can say efficiency variance. Material usage variance. Material usage variance. Chalo. Now, what is the material cost variance? So I have got 56,000 unfavorable. Okay. Chalo. Next, I need to calculate material price variance. Material price variance. What is the formula? Now please understand what I am saying. Standard quantity they have given, actual quantity they have given. Obviously, whenever you are paying the prices, you will pay price for the actual quantity whatever you have used. You will pay for the price which you have actually used. So normally it should be multiplied by with actual quantity. Okay. Please remember this. So how you are going to write? Actual by actual price. Actual price minus standard price multiplied by actual quantity. Why? Because I have actually purchased this much of material. X, Y, Z. Chalo. Let's see the actuals. 39, 65, 78. 39, 65, 78. 78. Sorry, this is they are asking actual price now. Why I am writing actual quantity? Chalo. Actual price was 5.5, 5.8. 5.5, 5.5, 5.8 and 7.5. 5, 6 and 7. This is multiplied by the actual quantity. Actual quantity is 39, 65, 78. 39, 65, 78. I hope you are understanding this. Chalo. We will use GT function. 5.5 minus 5 multiplied by 39,000. 19,500. Answer is coming positive. It means it is unfavorable. 5.8 minus 6 multiplied by 65,000. This is 13,000. Favorable because answer is coming in minus. 7.5 minus 7 multiplied by 78,000. This is giving me 39,000 and it is again unfavorable. I will take the total by pressing the GT. This is coming to 45,500 favorable. Sorry, it is positive. Unfavorable. Unfavorable. Sorry. Unfavorable. Okay. Now price we have calculated. Now we will go on material. We will go on material. Which variance? Material quantity variance. Chalo, please come. Material quantity variance. Actual quantity, standard quantity multiplied by standard price. एक second. There is one more thing which I want to discuss with you. Direct material price variance is a responsibility of purchase manager.
responsibility of the purchase manager, because he is responsible to just buy the materials. Now next, see here, material quantity variance, actual quantity. What was the actual quantity? So I have with me 39,000, 65,000, 78,000 minus 20, 40, 60. I hope you got my point. Now, if you are a production manager, please try to understand. If someone is slapping you for the rate on which purchase manager has purchased something, you will say, भाई तू पागल है क्या? मेरे को उसके रेट से क्यों मांग रहा है? वो तो कुछ भी लेके आएगा. If you want to beat me, please beat me with your rate. उसके रेट से मत मारो यार मेरे को. I hope you understood this. एक सेकेंड है, मेरा कैमरा का. Just a second. Just a second. चलो, so now what I was saying कि यार अगर कोई बंदा, अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, अगर उसको तुमको मारना है तो तुम कौन से रेट पे उसको मारो? अरे तुमको मारना है तो यार तुम अपने रेट पे मारो, स्टैंडर्ड रेट पे. अभी इफ यू विल टेल मी कि सर मैं उसको एक्चुअल रेट से उसको मारूंगा, तो भाई एक्चुअल रेट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द परचेज मैनेजर. तुम उसको काय को मारेगा उससे? इट इज नॉट गुड, वेरी बैड. You cannot beat him like this. So basically you will beat him or respect him with the standard price. Okay, so this was if I'm not wrong was 4-3 something, kuch 5-6-7, yes, 5-6-7. So if you have to beat him with 5, 6 and 7. 5, 6 and 7. So please come here. GD function, boss, GD function, please use GD function. So 39,000 minus 20,000 multiplied by 5, this is coming to 95,000. What? Unfavorable, because it is coming positive. 65,000 minus 40,000 multiplied by 6, this is coming to 1,50,000. Unfavorable, because this number is positive. 78 minus 60 multiplied by 7, this is coming to 126. Unfavorable. So if you take the total, this is coming to 371. Unfavorable. Okay, please check here. No. Okay. Are we doing some mistake? Minus 20 multiplied by 5. Just a second, guys. I think we are doing some mistake or something. 5.5 minus 5 multiplied by 40,000. 39,000. This should be 19,500. Okay, good. We will then 5.8 minus 6 multiplied by 65,000 should be 13,000. Favorable. Then 7.5 minus 7 multiplied by 78,000. 39. 45,500. Unfavorable.
next. So basically 5.5 minus 5 multiplied by 40,000, this is 20,000. 39,000 minus 40,000 multiplied by 5. This is coming to 5,000. I don't know which calculation I did. Just a second. This is 40, 60 and 80. I have deducted wrong numbers. Just a second. Sorry. My mistake. This is 40. Sorry guys, it was completely my mistake. 40,000. Voice is slow. Okay, I think my voice was slow, so some student told me to do this. 40, 60 and 80. Now let's calculate this. Now it will match. I don't know what I think I have taken wrong numbers. So I have taken 20, 40, 60. But वो 40, 60 और 80 था. Sorry. I was like, भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ऐसा कैसे मेरे साथ हो सकता है? चलो, please check here. चल यार जल्दी. चलो 39 minus 40 multiplied by 5. 5,000 favorable. Next 65,000 minus 60,000 multiplied by 6. This is 30,000 unfavorable. 78,000 minus 80,000 multiplied by 7. This is 14,000. 14,000 favorable. So now if you take the total, this is coming to 16,000 unfavorable. Chalo, let's do one thing. Go up. What was the material price variance? So it was 45,500 unfavorable. What was the material usage variance? 16,000 unfavorable. It was 16,500 something. Forty-five 500 plus 16,000. Again I'm doing some mistake. Just a second. 19,500 plus 39,000 minus 13,000. This is coming to 45,500. No. 14,500. This is 14,000 plus 5,000 minus 3,000. So 16,000. I don't know guys, इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है. आई थिंक कुछ कैलकुलेशन का कुछ मिस्टेक हुआ है. प्लीज ट्राई टू चेक. एक बार आपको कुछ मिल गया तो मेरे को सिर्फ बताना, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम इन दिस. तो कॉन्सेप्ट आ गया समझ में ना क्या था. चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. नाउ क्वांटिटी वेरिएंस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Quantity variance is a responsibility of production manager. Pooja, 56,500 you are saying? Correct. Yes, 56,500. Pooja is saying this. Just a second. 56,500.
पूजा नेक्स्ट का भी एक बार देख के मेरे को से बोलना, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन दिस. Responsibility of the production manager. Now, there is one star mark technique which you have to understand. Please check. If question have given two things, used slash purchased of materials. If they have given you used, material used, both, if they have given you both, so while calculating the price variance, please take material purchased, and while calculating the usage variance, please take material used. Please take material used. I hope you understood this. Very simple, boss. Material used. Okay, chalo. Now we have to focus on some next concept, which is material mix variance. Please come with me. Material mix variances. Please understand my point. Chalo, come here. Material mix variances. ध्यान से मेरी एक बात सुनना. What I'm trying to teach you. देखो यहाँ पे ध्यान से. Now, अगर आपको किसी ने पूछा कि यार एक क्वांटिटी वेरिएंस कैसे आ रहा है, ठीक है, वो तो आ गया. अभी आई डोंट नो, एक हल्का सा कहीं पे मिस्टेक है. आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन दैट, बट आप मेरा थोड़ा सा साथ देना. इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा मिस्टेक हो गया. आई डोंट नो कहाँ पे हुआ है, बट हुआ है. चलो, नाउ लेट्स फोकस ऑन समथिंग. मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि यार माइट बी पॉसिबल इफ यू सी, यहाँ पे आपको रेशियो 2 kg, 3 kg और 4 kg में ये रेशियो बोला है. बट अनफॉर्चुनेटली इफ यू सी द मटेरियल, ये इस प्रपोर्शन में गया ही नहीं है. एग्जाम्पल, इफ यू सी दिस, ये वही रेशियो में गया है, 2:3:4. बट अब अगर इसका रेशियो निकालोगे ना, तो आपको ये रेशियो सेम नहीं मिलने वाला. ओके, पूजा मिस्टेक उसमें है क्या? 1176,500 56,500. लेट मी चेक. 214,500 प्लस 377,585, 2 lakhs, 3 lakhs 60, 5 lakhs 60. नहीं यार, इसमें भी तो राइट ही है. चलो, 56,000 लिखा है, वहां 56,500 आएगा. हाँ, इधर ना ये. चलो, आ जाओ यहाँ पे. देखो, सो ये फ्लेक्सिबल तो सेम ही है, लेकिन इसमें जिस रेशियो में ये जाना चाहिए था, उस रेशियो में ये नहीं गया. So I have very beautiful trick. Please try to understand what I'm trying to teach you. आराम से देखना, सब कुछ आएगा समझ में. Now please come here. Okay, चलो, मुझे ना रिवाइज्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा पहले. It is called as revised quantity. Now how I'm going to calculate this, आराम से देखना. This will be a revision for people, okay? जिसको ये जो मेरे पास पढ़ता है ये मेथड, उसको ही मालूम है, बाकी किसी को नहीं पता है. प्लीज, बहुत सिंपल मेथड है. देखो, what I will do, I will calculate 39 plus 65, 78,000. This is my first step to calculate the actual quantity का total. This is coming to 182,000. 182,000. Now please understand, if I'm saying 1,82,000, ध्यान से मेरी बात समझना. You have to distribute this entire thing on the ratio of 2:3:4. You have to bifurcate this entire thing into this ratio. X will be 2, Y will be 3, and 4 will be Z. Now बचपन की याद ताज़ा करो and अपने आप को सोचो कि ये कैसे आ रहा है. Now 2 plus 3 plus 7, this is 2 plus 3 is
5 and 9. 182 divided by 9. This is some idiotic number is coming, but ठीक है. So you are getting 22. Okay, into 2 equal to, guys, I'm just taking some random not random, I'm calculating the ratio. Please don't expect me to teach how to calculate the ratio in revision batch. 0 4 4 4. Now 3 equal to 6 0 6 6 6. Next 4 equal to, this is 4 0, this is 8 0 8 8. I'm again writing, so this is should be, just a second, it should be 7. Wait, I should take 7 over here. So 7 4 11, this I should take 9. So the total is coming to 182. Again, what I did, first of all, I have taken this entire actual quantity over here. I have taken this entire actual quantity over here. Okay, this was my first step. Okay, this was my first step. What I did, I have calculated this entire thing and I have distributed this entire thing in the ratios of a 2:3:4, the same standard ratio. So I got revised quantity. Now please understand what I'm saying here. I'm giving you one beautiful trick. Please see here. I'm writing standard quantity, I'm writing revised quantity, and I'm writing actual quantity. When you compare actual quantity with revised quantity, you will get material mix variance. You will get material mix variance. When you compare revised quantity with actual quantity, you will get material yield variance. You will get material yield variance. Simple as that. When you compare revised quantity, when you compare actual quantity with revised quantity, you will get material mix variance. When you compare revised quantity with the standard quantity, you are going to get material yield variance. Okay. Now please understand how I am going to calculate the mix variance. Simple formula: actual quantity minus revised quantity multiplied by standard rate. Okay, now let's find out x, y and z. If I'll tell you, please give me the answer of actual quantities. It is 39, 65, 78. 39, 65, 78. If I'll tell you, tell me the revised quantity. Okay, 40, 4, 4, 4. 40, 4, 4, 4. Next, 60, 6, 6, 7. 60, 6, 6, 7. Next, 8, 0, 8, 0, 8, 8, 9. 8, 0, 8, 8, 9. Just two step. Actual quantity you have to take there, okay, and you need to bifurcate that into the ratios. Chalo. Now let's come here. What was the rate? So I think if I'm not wrong, the rate was 5, 6 and 7. Standard rate 5, 6 and 7. 5, 6 and 7. Chalo. Let's calculate this. We are going to use GT button. 39,000 minus 40,444 multiplied by 5. This is giving me 7220 favorable. 65,000 minus 6667 multiplied by 6.
This is giving me 25,998 unfavorable. Guys, please check, please check. 78,000 minus 8889 multiplied by 7. This is giving me 2223 unfavorable. Sorry, it is favorable. Sorry, it is favorable. Now let's take the total. So I'm taking the total. I'm getting 1445 favorable. 1445 favorable. This was the first. Now let me calculate material yield variance. What I told you, when you compare revised with standard, so revised quantity minus standard quantity multiplied by standard rate, so it is X, Y and Z. Now revised quantity, it is 40, 444, 60, 667, 80, 889. Okay, what you will do, standard quantity 40,000, 60,000, 80,000. I hope this time I should not make any mistake. Let me check. 40, 60 and 80. Yes. 40, 60 and 80. 40, 444 minus 40,000. Again I did the same thing. 5, 6 and 7. 5, 6, 7. Multiplied by 5 is equal to 2220 unfavorable. 60, 667 minus 60,000 multiplied by 6 is coming to 402 unfavorable. 80, 889 minus 80,000 multiplied by 7, this is giving me 6223. 223 unfavorable. Let's take the total. This is giving me 14,445. Okay, now please check, just take this is unfavorable. Okay, now I don't know, there is some calculation mistake, but the formula is right. Okay, I think that initially I have done something wrong, but please make sure that you all should know this, complete the formula which I have taught you. Standard quantity minus, so basically you need to, when you compare actual quantity with revised quantity, you will get standard quantity, correct? Actual quantity, if you compare with revised quantity, you will get material mix variance. When you compare revised quantity with the standard quantity, you will get material yield variance. Simple as that. I hope you got my point. Okay, so now basically if someone is going to tell you about the chart, how you are going to make material cost variance, okay, is bifurcated into two parts. Which one? Direct material price variance. Direct material price variance. And the next, what you will say, direct material usage variance. Material usage variance. Usage variance is further divided into two parts. Which part? Direct material mix variance and direct material yield variance. See guys, I'm again saying, I'm not defending myself, but I have made some silly mistake, okay, due to which it is not getting matched. In the next class I'm going to match this because I don't have that much of time, because I have taken some target. Okay, so if I'll give that much of time to this, we will ruin this entire revision session. Okay, so that's the reason we are not doing that.
अगर आपको ये मिस्टेक मिले प्लीज मेरे को बता देना कि सर क्या मिस्टेक था, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टुमारो इटसेल्फ। ठीक है, तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, मैं कल भी ये करवा दूंगा। बहुत सिली मिस्टेक होगा, आई स्टिल नो, बट आपको बस ये याद रखना दैट दिस इज अ फाइनल चार्ट। ओके, direct labor we are not doing because it is one and the same. Okay, so that's the reason I'm not planning to complete it. Now come on, this sales variance छोड़ा था पता, come please come here. चलो, now let us understand sales mix variance थोड़ा सा, come here. Let's discuss sales mix. चलो, now if I want to do the sales mix, फिर से मेरे को करना, चलो, I am going to take the same funda. Okay, let's take the total of actual quantity first. 1200 plus 1800 plus 2800, this is giving you 5800. 5800. Okay, I'll take the same number and I will distribute in this ratio 1 2 3. I'm going to bifurcate this into 1 2 and 3. This is coming to 6. 5800 divided by 6 into 1 equal to, so this is giving you 967. Next, 2 equal to, this is giving you 1933. 3 equal to, this is giving you 2900. It is giving you 2900. Just check once. 2900 plus 1933 plus 967. Yes, it's matching. 5800. Okay, now same equation we are going to follow. Chalo, come on. So basically, first of all, we will have to take sales mix variance. How you are going to calculate sales mix? Simple. Actual quantity minus revised quantity multiplied by standard rate. And how you are going to calculate sales yield variance? Sales yield variance. So this was revised quantity minus standard quantity multiplied by standard rate. Chalo, what was the actual quantity? Come up. Chalo, 1200 18 2800. 12 18 1200. What was that? 1200 18 1800 and 2800 and 2800 minus. What was the revised quantity? 967. Next, 1933. Next, 2900. What was the standard rate? So my standard rate was 10 20 30. 10 20 and 30. So please calculate this. This was for A, B and C. 1200 967 multiplied by 10, this is giving you 2330. Please understand, this is sales, so we have to take the direct impact. 1800 minus 1933 multiplied by 20, this is giving you 2660 unfavorable. 2800 minus 2900 multiplied by 30, this is giving us 3000 unfavorable. So now I'm taking the total, this is coming to 3330 unfavorable. Okay, now let's calculate yield variance A, B and C. What was my revised quantity? 967 1933. This is 2900 minus. Let me check the standard. So the standard quantity was 1 2 3 1000 2000 3000 1000 2000 and 3000. 1000
चलो hey bye multiply. So 10 20 30 967 minus 1000 multiplied by 10, this is coming to 3330 unfavorable. 1933 minus 2000 multiplied by 20, this is 1340 unfavorable. 2900 minus 3000 multiplied by 30, 3000 unfavorable. Please take the total. It is coming to 4670 unfavorable. Now let's take the total of this two. This is coming to 8000 unfavorable. Now let's go to the sales volume variance. If you notice, it was 8000 unfavorable. So now see, in the last question we have did some mistake, that's the reason it's not coming, otherwise it will come. So sales mix variance, sales yield variance. My sales mix variance was 3330 unfavorable, and this was 4670 unfavorable, 4670 unfavorable. Unfavorable. I hope you got this. Yes. So finally we have covered sales, direct material, and I'm assuming you know direct labor also, huh, boss? Okay. Chalo. Theory we have covered. I think I should just close this here, okay, because I think it's already 9 and this was the first lecture, so that's the reason I don't want to just focus more on this. थोड़ा सा छोड़ देते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं. Next session we are going to complete this, okay. 3 लेक्चर में 4 lectures I have taken the target. I think 4 lectures में आराम से हो जाने का चांस है, ठीक है. चलो, till then, bye, good night, see you in the next class, bye.